Okay, so we're gonna be looking at lower limb के जो fractures हैं. So we're gonna start with the proximal femur. So the proximal femur का थोड़ा सा anatomical background अगर हम revise करें तो we need to know what the blood supply is. वैसे इसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, but just to revise. So you have the medial femoral circumflex artery right over here, and right over here. And then we have the lateral circumflex artery right over here. Similarly, we have the retinacular branches that are arising from the medial femoral circumflex artery जो कि इस तरह से ascend कर रही हैं. And we have the artery of ligamentum teres, which is very, very small, and it supplies the head of the femur or and the acetabulum, but it's very small, and it's so it's negligible in elderlies. And then the medial and lateral femoral circumflex arteries are the major supplies, and the ascending branches of the reticular artery are not very subsequential or substantial, sorry. So types हमारे पास क्या हैं? So we can have intracapsular type of fracture, or we can have extracapsular. So intracapsular or extracapsular का क्या मतलब है कि this is the capsule. ठीक है, capsule is also called subcapital, क्योंकि capital का मतलब head होता है, तो capital का मतलब head है, sub का मतलब है below. So below the capitus of the femur. So intracapsular is this region, ठीक है, and then extracapsular is this purple region, right? So intracapsular में हमारे पास जो fractures हैं, we can see here that this is an intracapsular fracture right here. And then when we're talking about extracapsular fractures, which are outside of this capsule, which by the way, the intracapsular is also the neck, right? Femoral neck is subtrochanteric and intertrochanteric. Intertrochanteric का क्या मतलब है कि ये greater trochanter है, ये lesser trochanter है. Intertrochanteric का मतलब है यहाँ पर, and then subtrochanteric is below the trochanters, so this is below, or you could see below the trochanters is the subtrochanteric, and then intertrochanteric, and then this would be the subcapital, right? So what are the causes? The causes depends on the etiology or the age group. So हमारे पास जो elderly and young है, इसमें difference क्या है कि elderly को generally osteoporosis होता है और low energy fall के साथ होता है, which is what happened to my nano. तो osteoporotic वो हैं, and so she had a low energy fall, which is why she fractured the neck of her femur, ठीक है? The proximal femur. And then young में high energy trauma होता है. क्यों? Because the bone is strong in young people, right? So when the bone is strong, you need high impact, ठीक है? And pathological is अगर metastatic bone disease है, right? So there's a bone disease, metastasize कर गया है, so now this is what leads to pathological fractures, right? So then we have clinical features. So clinical features क्या हैं कि pain होगा, of course. उसके अलावा इसमें जो feature होता है ना, external rotation and shortening of the affected limb. Because if you can imagine कि अगर ये for example tear हो गया है और ये externally leg rotate हो गई है, यानी ये इस तरह से बाहर की तरफ आ गई है, तो उससे क्या होगा, जो limb है, not only is the limb shortened, but it's also externally rotated, ठीक है? And this is a feature of proximal femur के fractures, ठीक है? So proximal fractures, fractures of the proximal femur will be externally rotated and shortened, ठीक है? So then we're just going to be looking at the treatment, ठीक है? Now the treatment depends on the type of fracture that we have. Now intracapsular का हमने क्या मतलब हमने कहा था, it's this one, ठीक है? It's on the neck, right? Intracapsular, ठीक है, on the neck. So इसका जो है internal fixation हम dynamic hip screw के साथ करते हैं और multiple cancellous screws. Now although this fracture जो कि इस image में show किया गया है, this is the intratrochanteric fracture, intertrochanteric fracture, but जो हम जिसकी बात कर रहे हैं right now, that is ये वाला कि intracapsular. तो intracapsular में हमारे पास dynamic hip screw हो सकता है, dynamic hip screw हो सकता है, और ये जो है right over here, this is multiple cancellous screws, ठीक है? So multiple cancellous screws का क्या मतलब है कि multiple screws हैं, right? Like this, this is the correct fracture. This is the intercapsular fracture, right? इसको इस तरह फिक्स किया जा सकते हैं, और एक और ये है कि डायनामिक हिप स्क्रू यूज कर सकते हैं. सो डायनामिक हिप स्क्रू क्या है कि इट्स अ सिस्टम विद अ प्लेट and screw, ये screws हैं, that provides greater stability, especially for unstable fractures.
where जो ये CCS है, this is CCS, right, is simple screws that are more suitable for stable non-displaced fractures. तो ये हम कब यूज़ करते हैं? अगर थोड़ा सा हमारे पास unstable fracture है, क्योंकि ये dynamic hip screw stability देता है, और ये हम यूज़ करते हैं stable fractures के लिए जो non-displaced है. अगर for example displaced है, ठीक है, unstable और oh no, there we go. So अगर so undisplaced है तो हम ये दोनों dynamic hip screw यूज़ कर सकते हैं, एंड multiple वो, और ये हमारे पास ज़्यादा अगर unstable है, ठीक है, और ये तब है जब हमारे पास stable है. So this is unstable and this is stable, but remember both of these are undisplaced. Now what if it's displaced, right? Like for example, let me show you, like this is displacement, right, and this is sort of displaced, ठीक है, it's incompletely displaced, this is fully displaced. So अगर displacement है तो it depends on if the patient is old or young, क्योंकि अगर young है तो the patient's bone can heal itself, so all we need to do is reduce it, which means again alignment and internal fixation to preserve the head. So हम उसको अलाइन कर देंगे और इंटरनली फिक्सेट कर लेंगे. लेकिन एल्डरली में हेमी आर्थोप्लास्टी यूज़ होती है, जो कि ऑस्टिन मोर विच इज़ यूनिपोलर और बाइपोलर प्रोस्थेसिस यूज़ हो सकता है. एक ही है, इसमें रिप्लेसमेंट हम कर देते हैं एल्डरली में. अब इसका क्या है, ऑस्टिन मोर इज़ यूनिपोलर एंड देन बाइपोलर प्रोस्थेसिस क्या होता है. सो जो यूनिपोलर हेमी आर्थोप्लास्टी एंड बाइपोलर हेमी आर्थोप्लास्टी है, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें वन पीस है जिसमें हेड और स्टेम ही सिर्फ हम मेटल एंड बॉल दे देंगे. इसमें टू पीसेस होते हैं, इसमें हम आउटर एंड इनर हेड्स दो चीज़ें यूज़ होती हैं. अब ये कहाँ पर होता है, इनसाइड द प्रोस्थेसिस, यानी ये आर्टिकुलेट कर रहा होता है दोनों विद द acetabulum and the head of the femur, and also जो बाहर जो ring है acetabulum का, and this is just between the prosthetic head and the acetabulum, right? So इसकी जो cost, it's cheaper and more expensive. Now wear on the acetabulum, कि ये wear and tears के कितने ज़्यादा है, क्योंकि metal on cartilage ज़्यादा होती है. Now this is less, क्यों, क्योंकि reduced friction है. क्यों, क्योंकि हम जो एक जगह पे force लगनी थी अब हम दो जगहों पर force लगा रहे हैं. So अगर हम वो इसको equal कर देते हैं या distribute कर देते हैं, बल्कि unequal से बेहतर word है distribute कर देते हैं, तो एक जगह पे कभी भी ज़्यादा force नहीं apply होगी, तो ये reduced friction होगी. तो but longevity के मामले में this is lower and this is higher because less wear and tear है, of course. लेकिन ये हम पे क्यों यूज़ करते हैं, very elderly में, ठीक है, या low demand, जिनका ज़्यादा हिलना जुलना ही नहीं है, ठीक है. और इसमें हम एक्टिव एल्डरली में करते हैं, क्योंकि ये उनकी हो सकता है ज़िंदगी ज़्यादा लंबी हो, सो वी वांट कि हम बार बार उसको खोलें मत और एक ही दफ़ा उसको रिपेयर करते हैं. अच्छा, इसमें वी नीड टू प्रिजर्व द ब्लड सप्लाई इफ़ देयर इज़ लेस देन 12 आवर्स ओल्ड. दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि ब्लड सप्लाई अगर compromise होते हैं तो we can have avascular necrosis of the head. And Gardner classification क्या है of hip fractures. So we're gonna see कि this is, so the first two are undisplaced and then this is displaced. But this is undisplaced, but it's the fracture is incomplete, ठीक है. So this is an incomplete undisplaced fracture. But इसमें क्या है कि this is a complete fracture. So this is a complete undisplaced fracture. Now this both is displaced. ये थोड़ा सा इस मामले में displaced और ये इस direction में displaced है, right? तो इसमें क्या है, these are both complete fractures, right? Right? But this is a complete fracture and this is displaced. But this is incompletely displaced because it's still in possession. And this is a completely displaced fracture. So just to recap, जो number 1 है, that is incomplete undisplaced. This is number 2 is complete but undisplaced. This number 3 is complete and also partially displaced, and this is both complete and completely displaced, right? So Gardner classification helps us figure out कि हमने manage कैसे करना है. 1 to 2 में हम fixing करेंगे, ठीक है, ठीक है. So fixing का क्या मतलब है कि हम screws use करेंगे, dynamic hip screw use करेंगे, CCS use कर सकते हैं. So we can use screws and plates in order to fix it. लेकिन इसमें हमने क्या करना है, एल्डरली में हम रिप्लेस करेंगे, राइट, क्योंकि ये डिस्प्लेस्ड है ना. तो मैंने क्या कहा था, डिस्प्लेस में हम रिप्लेसमेंट करेंगे एल्डरली में. यंग में हम क्या करेंगे, ओपन
reduction, internal fixation. ठीक है, so this is just the intracapsular fractures. Now let's look at the extracapsular fractures. इसमें मैंने कहा था intertrochanteric, जिसको pertrochanteric भी कहते हैं, and subtrochanteric. तो इसको हम फिक्स करते हैं फिक्स विद डायनामिक हिप स्क्रूज, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था कि इंटरट्रोकैंटेरिक में हम यूज़ करते हैं और हम इंट्राकैप्सुलर में भी यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटरट्रोकैंटेरिक में हम यूज़ करते हैं डायनामिक हिप स्क्रू और सब ट्रोकैंटेरिक में इंटरमेडुलरी नेल और स्लाइडिंग स्क्रू प्लेट। अब वाई? क्योंकि सब ट्रोकैंटेरिक दिस इज़ वेयर वेट बेयरिंग बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट। सी वेट बेयरिंग इस रीजन तक तो नहीं है, लेकिन यहाँ तक वेट बेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। सो इसमें हम इंटरमेडुलरी नेल यूज़ करेंगे ताकि जल्दी से बंदा रिकवर कर सके। एंड देन स्लाइडिंग स्क्रू प्लेट क्या है कि it's a single large sliding screw. This is the sliding screw with the sliding side plate attachment. ठीक है, so that is sliding hip screw. ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि लिम जो शॉर्टनिंग हमने कहा था, शॉर्टनिंग एंड एक्सटर्नल रोटेशन थी, हो सकता है कि जो लिम शॉर्टनिंग है वो परमानेंट हो जाए। दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन दैट माई नानो फेस। एंड नॉन यूनियन भी हो सकता है और मैल यूनियन हो सकता है। ये तो हमेशा फ्रैक्चर में जब भी हम करेंगे तो ये एक हमेशा कॉमन फीचर है, राइट।